Now students, we are discussing here our chapter 3, that is plant kingdom. As we discuss these two terms, that is cryptogamy and phanerogamy, and we discuss the difference between these two terms. Now we will divide the plant kingdom on the basis of these two terms, that is cryptogamy. Cryptogamy further divided into three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta further divided into algae and fungi. Fungi we discussed in chapter 2 also. Next, phanerogamy. Phanerogamy divided into gymnosperm and angiosperm. एक इम्पॉर्टेंट आपको टर्म यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट सी वीड्स आर अ सोर्स ऑफ आयोडीन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिवीजन, दैट इज एल्गी. ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एल्गी. एल्गी मेनली आर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएं, कि कैरेक्टर्स पर जाएं, तो एल्गी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं वो आपको देखने हैं. दैट इज़ दे आर क्लोरोफिल बियरिंग. क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. इनकी जो बॉडी होगी सिंपल होगी, थैलॉइड टाइप की होगी. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होंगे और मेनली ये एक्वाटिक होंगे. एक्वाटिक मीन्स फ्रेश वाटर एंड मरीन. ओके, अगर इनके हम साइज़ पे जाएं तो इनकी साइज़ भी वेरिएबल होंगे. ठीक है, ये मेनली कहाँ पाए जाएंगे, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. ओके, एंड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, व्हाट आर द वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स? मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल, wood. Okay, so these are the major characters of the division algae. अब हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएं तो इफ़ वी गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एल्गी, यहाँ पे हमने 3 लेयर्स बनाए हैं. दीज 3 लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू सेलुलोज, गिलेक्टोज एंड मेनन्स. ओके, आपको ये तीनों लेयर्स याद रखनी है एज इट इज़. ठीक है, किस किस की बनी हुई है ये? inner one, middle one and outer one, cellulose, galactans and mannans. Okay, now we will discuss the algae in the form of lichens, that is its division. algae का division. Okay, अगर हम animals पे बात करें तो in case of animals, इसमें हम example discuss करते हैं algae के लिए. sloth bear, you can write here that this is the example. And in case of lichens, as we discussed in chapter 2 also, that is fungi plus algae, that they both are showing symbiotic association or mutualism. Okay, fungi is giving shelter to the algae and algae is mainly what is doing? Giving food to the fungi. So they are both benefiting to each other and showing symbiotic association, that is lichens. Okay, जिसमें हमने टर्म यूज़ किया था फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट. ओके, नाउ यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स. जो हम माइक्रोस्कोप में यूनिसेलुलर फॉर्म्स को देख सकें, जो कॉलोनी बना के रह रहे हैं या फिलामेंटस फॉर्म में रह रहे हैं, तो इनके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. Colonial forms, that is volvox, filamentous form Eulothrix and Spirogyra. So this is very important and you have to learn these examples. Okay, as we go in our NCERT, that is in case of figure 3.1, the algae is mainly having variable size and form. ठीक है, mainly their size will be vary from microscopic to colonial forms and to the filamentous form. And in the series we discuss these example, that is Chlamydomonas, volvox, Eulothrix and Spirogyra. Okay, now we will discuss by what means algae is reproducing. Okay, first we will discuss vegetative reproduction. Vegetative reproduction mainly algae में किसके थ्रू हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन, एंड बाय फ्रेगमेंटेशन इट इज़ डेवलपिंग इनटू थैलस. ओके, देन asexual reproduction. Then we'll go proceed to the asexual reproduction, that is production of different type of spores. Okay, and they are flagellated and motile. Motile मतलब मूव कर सकते हैं और flagella प्रेजेंट होगा. इनको हम कॉमनली क्या बोलेंगे? These are commonly known as
zoospores. Okay, on germination they will rise to the formation of new plants. So by means of asexual reproduction, what they are doing, producing different type of spores. These spores are known as zoospores, and these zoospores are flagellated and motile, and on germination they are giving rise to a new plant. And in case of vegetative reproduction, here is doing vegetative reproduction by means of fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Okay, next we will proceed to the sexual reproduction. In case of sexual reproduction, we know there will be fusion of male and female gamete. This is our female and this is our male. So here fusion of two gametes is occurring and a zygote is formed, that is 2 men. Okay, so on the basis of this gamete similarity, we will discuss different terms here, and these gametes are motile and flagellated in case of Chlamydomonas. ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. In case of Chlamydomonas, these gametes can be flagellated and similar in size in case of Chlamydomonas. Okay, so here we will discuss different terms like isogamous, anisogamous, where gametes are similar in size. Okay, done. This term is known as isogamous. Okay, when they are non-motile, here we will discuss the example Spirogyra. Okay, when they are motile and flagellated, they are Chlamydomonas. Example is Chlamydomonas. So here the pink words are example. Okay, so motile, flagellated are Chlamydomonas. जब flagella होगा जब भी तो वो मूवमेंट करेंगे और जब भी हम उनको मोटाइल बोलेंगे. नॉन मोटाइल मतलब इसमें नॉन फ्लैजेलेटेड वाली बात करेंगे, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा. तो हेयर एग्जांपल इज स्पायरोगैरा. व्हेन गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, दीज गैमीट्स आर नोन एज आइसोगेमस. व्हेन गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, दीज आर नोन एज एनाइसोगेमस. ओके, व्हेन fusion of two gametes which are dissimilar in size. Okay, here we will discuss the some species of Chlamydomonas. Okay, done. So here we discuss three terms, that is anisogamous, isogamous. Okay, gametes similar in size, isogamous. Gametes dissimilar in size, anisogamous. Okay, now if we talk about female gamete is large and non-motile. Okay, here male gamete is coming, that is small and motile. Okay, then what is forming a structure that is known as oogamous. Okay, so what we are saying, fusion between one large non-motile means जो movement नहीं कर सकता. ठीक है, and a smaller motile gamete is termed oogamous, और ये हम डिस्कस करेंगे in case of volvus and fucus. Okay.